Yesterday, at this very stage, we had Sharad Pawar and Supriya Sule of the Nationalist Congress Party, SP group, if I may call them. And in the interest of fairness and credibility for which India today sees as an article of faith, we thought it was only appropriate to bring the other side. Praful Patel, Union Minister, former Union Minister and NCP Working President is with us. And of course, my colleague and our outstanding Mumbai Bureau Chief, Sahil Joshi with us. Please give a very big welcome to Mr. Patel. Yesterday, sir, we had Sharad Pawar and Supriya Sule on this stage, and they seem to believe they are the real NCP. Who is the real NCP? The one with Praful Patel and Ajit Pawar, who for years were living in the shadows of Sharad Pawar? Or is it Sharad Pawar and Supriya Sule? Asli NCP kaun hai? Dekho, let me preface it. You said living in the shadows of Sharad Pawar. Of course, he has been our leader for decades, and having worked with him so closely, it is absolutely necessary to acknowledge that one has had a great relationship with him. That does not mean that politically we could not have different paths, and that is exactly what has happened of late. अभी हमने अजीत दादा पवार के नेतृत्व में एनसीपी आगे बढ़ाने का दायित्व हमने लिया है और इसीलिए हम वो काम में जुटे हुए हैं. Who is the real NCP? You're not answering my question. Is it your faction or is it the Sharad Pawar group? देखिए Rajdeep, I will speak in Hindi and English because we also have an audience. It's not only your TRPs which matter. हमारे TRP भी होते हैं. हमको भी देखने वाले लोग बहुत हैं. तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये सब जो फैसला है, आखिर अंतिम ये फैसला इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होने वाला है और योगायोग की बात यह है कि इसकी सुनवाई कल 6 तारीख को होने वाली है. लेकिन और 6 तारीख को सुनवाई होने के पश्चात जो भी फैसला चुनाव आयोग का होगा वो सही फैसला माना जाएगा. अब मैं उसमें भविष्यवाणी करने के बजाय थोड़े दिन इंतजार ही कर लो, क्योंकि आपको और एक आइटम मिलेगी न्यूज वर्दी, उसके बाद एक और इंटरव्यू आप मेरा कर सकेंगे. लेकिन इससे पहले ही आपने कॉन्फिडेंटली बता दिया था कि आप ही रियल एनसीपी है और आपको ही पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल आपको मिलेगा. लोग कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है. इलेक्शन कमीशन आजकल जो भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है उन्हें पार्टी का नाम और सिंबल दे देता है. इतना ही नहीं, तो व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट इवन आपके लॉयर्स भी सेम है. जो शिवसेना के लॉयर्स थे यानी शिंदे गुट के, वही लोग आपका भी केस लड़ रहे हैं. देखो, वकील का काम क्या है? फीस लेना और आगे काम करना, बराबर है अपने क्लाइंट के लिए. तो वो वकील कोई फिक्स नहीं होते पार्टी के हिसाब से. तो इसलिए प्लीज उस बारे में मत बात करिए. मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि फिक्स्ड मैच, आपको लगता है कि मुझे पहले से ही मालूम, मैंने भविष्यवाणी की. आप मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी. जानते हैं ना थोड़ा बहुत? हम भी है. तो मैं भी, हाँ, तो आप बिल्कुल हैं. तो मैंने भी तो कानून, मेरे को भी पढ़ना आता है, मुझे भी कॉमन सेंस है, मुझे भी फैक्चुअल पोजीशन क्या है इसका अध्ययन करना और उसके बाद कुछ बोलना ये कोई उचित लगता है. और तभी मैंने कुछ बात कही. तो मैंने ये थोड़ी कहा कि इलेक्शन कमीशन का मैं स्पोक्समैन हूं. मैंने तो ये कहा कि मैं अधिकृत तौर से ही कह सकता हूं कि भाई आज नहीं कल जब भी फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स और लॉ दोनों के आधार पर बोल रहा हूं. सर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई सेड दैट. और यही बात दूसरे भी बोल सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये बात मैंने क्यों कही. मैंने बात ये इसलिए कही क्योंकि आपका जो पिटीशन है इलेक्शन कमीशन के सामने, जब आप एनसीपी का नाम और एनसीपी का सिंबल क्लेम कर रहे हो और कह रहे हैं कि हम ही असली एनसीपी है, आपका पिटीशन ये कहता है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जिस तरीके से चला रहे थे वो अनडेमोक्रेटिक वे से चला रहे थे. पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा था. पार्टी में कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा था. और इसीलिए आप लोगों ने 30 जून को 2 जुलाई को तो आप बीजेपी के साथ चले गए. पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटाकर अजीत पवार को आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया. अब बात यहां पर आकर रुकती है कि आप ही थे
जिन्होंने 1 साल पहले शरद पवार का नाम पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में प्रपोज किया था और उसके बाद वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। 2 मई 2023 को शरद पवार ने जब इस्तीफे की पेशकश की थी, उसके बाद 3 दिन के बाद आप ही के नेतृत्व में पार्टी के कार्यालय में पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। आप ही ने एक प्रस्ताव वहां पर रखा था और शरद पवार को कहा आपने कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। इसके बावजूद आप ही की तरफ से यह पिटीशन किया गया कि पार्टी को डेमोक्रेटिकली नहीं चलाया जा रहा था। इसीलिए सवाल उठता है कि आपको क्यों लगता है कि एनसीपी आपको सौंपी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से? साहिल, आप आज इंडिया टुडे आज तक में हैं और कल कोई दूसरे चैनल में आप काम नहीं कर सकते, ऐसा कभी है क्या? कोई बंधन है? मतलब कल तक मैंने how are you कल तक are you comparing a TV channel to a political party? No. The limited point you must understand, Rajdeep, is that what I'm saying is what was valid yesterday, कल मेरी कोई भूमिका थी और आज मेरी भूमिका अगर बदली है तो उसके लिए कोई बंधन है? ये मेरा प्रश्न है। आपके प्रश्न का काउंटर प्रश्न है। दूसरी बात मेरा कहना है, उसका जवाब मैं दूं? नहीं, दूसरी बात नहीं। आप you are interviewing me or I am interviewing you? You asked me a question, that's why I wanted to answer. But my limited point here again is, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि पार्टी का पिटीशन है अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पार्टी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम और नियमावली जो बनती है, जो सभी पार्टी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन उसका मॉडरेटर होता है जो देखता है कि चुनाव समय समय पे हुए कि नहीं हुए हैं। उसके आधार पर जो हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी हुई कभी नहीं है। ये हमने पहले इंटरव्यू में आपको या और लोगों को कहा है, वही बात आप मुझे पूछ रहे हैं। अब इसका फैसला दूध का दूध पानी का पानी। अब 6 तारीख को कल से जब इलेक्शन कमीशन की हियरिंग शुरू होगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता ना, ठीक है मैं दूसरे चैनल के लिए काम कर सकता हूं, लेकिन कल मैं दूसरे चैनल में जाके ये तो क्लेम नहीं कर सकता ना मैं असली इंडिया टुडे हूं। इंडिया टुडे तो इंडिया टुडे ही रहेगा। इसीलिए तो सवाल उठता है कि आप दूसरे। हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको? आपका बिल्कुल कहना सही है कि I cannot claim until the election commission decides. But to make a claim to the election commission, I will have to take those few steps before I make that claim. What will the election commission adjudicate? Election commission का फैसला तो हमारी जो petition है उसके आधार पर ही होगा ना। बिना petition डाले वो फैसला कर देंगे। Sure, but you see the question, Mr. Praful Patel, is as Sahil gave you the chronology. You in the month of May insisted that Sharad Pawar stay on as party president. 1 minute. Insisted he stay on as party president. You even went with Mr. Sharad Pawar to the first India Alliance Coordination Committee meeting in Patna. Within a week of that, you say you leave the party, you accuse Mr. Pawar of running it in an undemocratic manner, and you leave and you join hands with the BJP. Mr. Pawar, Sharad Pawar, on this very stage yesterday told us the reason this happened is because 6 or 7 of the MLAs and MPs came to him and said, "Sir, let us join the BJP, otherwise the enforcement directorate and the enforcement agencies will come and put us in jail." The actual reason for all of you leaving is because you all feared that ED will act as we are seeing acting against other opposition parties. Therefore, you made this switch. These are all excuses, undemocratic and all. That's only, you're smiling, which means I'm telling the truth. No, I'm smiling because of your lack of knowledge and ignorance. Okay, please tell us what is the truth then. Please tell us the truth now. देखिए, इसका genesis ये है कि You can answer in English also, occasionally. मैं एक ही स्कूल में आपके साथ पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि इंग्लिश भी मुझे बोलना आता है। पर मैंने पहले ही कहा कि मैं दोनों इंग्लिश हिंदी में बोलूंगा। इसका जेनेसिस ये है कि हमारे पार्टी में बीजेपी के साथ जाने के मामले में कई बार हमारी पेशकश हो चुकी है। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि पेशकश हुई का मतलब अंतिम फैसले तक हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन ये बात बोलना कि हमने बीजेपी के साथ कोई केवल 6-7 लोगों को कोई परेशानी थी इसलिए जाकर शरद पवार जी को हमने रिक्वेस्ट की, ये बात बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जो लोग मिलने गए भी थे शरद पवार जी को, आखिरी की जो बात बोल रहे हो आप, बिकॉज ये क्रोनोलॉजी आप 2023 की बात बोल रहे हैं, इस क्रोनोलॉजी में जो लोग आज शरद पवार जी के साथ है वो लोग भी उसमें ये कहने के लिए गए थे कि भाई आप
हम और सब मिलकर You can बीजेपी take के names. साथ हम आप लोगों किसकी को बात जाना कर रहे हैं? नहीं, जो आज पवार साहब के साथ है, जैसे जयंत पाटिल साहब है, जितेंद्र आवाड है, बाकी के They लोग were हैं, all ready to go with the BJP. सारे 2022 में पूरे एनसीपी के 53 एमएलएस में से 51 एमएलएस, क्योंकि उस टाइम अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी बाहर नहीं थे, 51 आउट ऑफ 51 एमएलएस और सारे जो एनसीपी के 15 मिनिस्टर्स थे, सबने उस टाइम पे पवार साहब को लिखित देकर यह विनंती की कि हम लोगों को बीजेपी के साथ, शिंदे जी के साथ, उस टाइम पे शिंदे जी गुवाहाटी में थे, हम लोगों को सबने मिलकर सरकार महाराष्ट्र में स्थापित करना चाहिए। अब वो उस टाइम की बात 2022 की कोई करता नहीं है। No, no, अभी लेटेस्ट जो हुआ उसका इतना हो रहा है। You're telling us something very important that we did not know here, at least in Maharashtra. You are telling me in June of 2022, when Eknath Shinde had taken his MLAs to Guwahati and was planning to break the Shiv Sena, the NCP MLAs had a written letter saying they would support the BJP government. And is it true that you and a couple of others were actually heading to the airport to meet Amit Shah to finalize an alliance in June 2022? क्या आप ये कह रहे हैं? Is that what you are saying today? The NCP was also going to join 15 months ago the BJP Narendra Modi-led government at center and Devendra Fadnavis as Chief Minister in Maharashtra. आपने जो कहा, I fully subscribe to that question, that we were in 2022 June, when Mr. Eknath Shinde had left from Mumbai to Surat and Surat to Guwahati and finally via Goa came to Mumbai. The NCP MLAs, as I said, all 51, all the ministers, including the people who are not with us and who are with Mr. Sharad Pawar today, were party to a joint effort that we should join the government. At that time, we were not aware whether Mr. Eknath Shinde will become the chief minister. Our presumption was, and our desire at that time was, to join a BJP-led government in Maharashtra. And Sharad Pawar was part of it? He endorsed it? And I can tell you that we were completely in sync. Mr. Jayant Patil, our party president then, who was nominated by me, of course, but he at that time made a call to Mr. Pawar saying that we are going to meet Mr. Amit Shah. Mr. Pawar cautioned him that there's too much of media, that we all will go to the airport and, and there will be a lot of news and speculation. Try to meet a little bit more, discreetly. And by which time, 2-3 days passed and Mr. Eknath Shinde got sworn in as the chief minister. And we were a little bit, surprised, because we were expecting Mr. Devendra Fadnavis to become the chief minister. And probably that was the reason why the entire exercise at that time did not fructify into an alliance which should have happened in June of 2022. No, but was it endorsed by Sharad Pawar? Yes. Because I asked this question to Mr. Pawar, and so let me complete. What he is saying, that yes, we were talking to BJP. I mean, to quote his words exactly, that some of the leaders from my party, said that we have to, we want to talk with the BJP. And I said, okay, in democracy, we have to keep the dialogue open. And that's why I allowed them to have a word with Amit Shah and held a discussion with the BJP leaders. But I never endorsed it. Eventually, I never went with the BJP, is what he claims always. See, you can say the end result never converted into what was supposed to happen. Yes. That's a different thing. But if the question is that were we permitted to talk to the BJP, the answer is yes. Okay, that's a major news point you're giving to us, that in June 2022, you are all set in a way to tie up with the BJP-led government of Devendra Fadnavis and presumably the Narendra Modi-led government at the center. But I still want to ask you, Enforcement Directorate ka to thoda dar tha. You see, your property was attached, your very luxurious property in the heart of the city was attached. It was suggested that Iqbal Mirchi, the underworld don, the investigation had led to that attachment. You were under the scanner. Mr. Tatkare, who's here, was under. Several of your
of your ministers were under the scanner. Some of your NCP MLAs had gone to jail like Anil, Deshmukh, Nawab, Malik. That was what turned the tide. Are you saying that had nothing to do? Because suddenly we find no cases against any of you being pursued. The Prime Minister in the last week of June called you the Nationalist Corrupt Party, said the irrigation scam. He said there was corruption. He referred to the irrigation scam, cooperative scam. वो सब आप भूल गए हैं. कुछ तो है इसमें. Chronologically बताऊं आपको. 2014 is during that time the Prime Minister called NCP the naturally corrupt party. Listen, सुनो तो. और उसके बाद 2014 का विधानसभा का इलेक्शन हुआ और NCP ने went on television at 1 p.m. in the afternoon on the day of the election. No, the results were still trickling in. They were not finally, but we knew the trend. And we offered unconditional support to the BJP from outside. So this is the history of 2014. So if we were the naturally corrupt, and that time where was the ED? Where was the other issues what you are talking about? See, this is all a canard. And even about me, you asked me, there is no ECIR or anything against me. There was a tenant behind in a building in Mumbai. There are many buildings in Mumbai have unauthorized tenants. If you go into something and if some case is made out to be, and somebody else's property that has No, but is it not true that all the cases that are being pursued have been dropped? I was told by one Shiv Sena MLA, I sleep well at night now that I have switched sides. Do you also sleep well at night as a result? I always slept well at night, Rajdeep. I never had a case, so don't worry about me. I'm defending my other colleagues who are not here to defend themselves. The cases which you are talking are quite imaginary. In 2014, there was no case against anybody. We agreed to support at that time. In 2022, as I'm telling you very authoritatively, we were very, very keen to join the government. And forget me. Don't talk about me or others or who are with Ajit Pawar today. The people who were with Sharad Pawar today, then and today, are the ones who willingly wanted to join the BJP-led government. Sir, लेकिन आप लोगों के तरफ से देखिए, आपने 2014 का इलेक्शन बहुत क्लोजली फाइट किया. आपने सुनील तटकरे का नाम लिया, उनको भी याद होगा. पार्थ पवार यहां पर बैठे हुए हैं. अजित पवार के बेटे यहां पर आए हुए हैं. आज अजित पवार तो नहीं आ सके. 2014 campaign of the BJP, single point agenda of the BJP was to attack Ajit Pawar. Ajit Pawar was made in Maharashtra some kind of a villain in irrigation scam, which even the Prime Minister mentioned recently in Bhopal. And suddenly we see that BJP and NCP coming together. How do you think that the people will react to this? What do you think that how do you think that the people will perceive this? देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीति में दोनों बाजू से बोली जाती है और इसलिए मैं उसके तू में न जाते हुए इतना ही कहूंगा कि जहां तक अभी नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जब वो मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, तब यूपीए की सरकार दिल्ली में होते हुए सबसे अच्छे संबंध उनके किसके साथ थे? आदरणीय पवार साहब के साथ थे और प्रफुल्ल पटेल के साथ थे. और हम लोगों को वो लगातार सबसे अच्छे संबंध होते. नहीं, मैं 2014 के पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट की बात बोल रहा हूं, जब मोदी जी दिल्ली कभी भी कोई काम हो, कुछ भी हो, आदरणीय पवार साहब को मिलते थे. पवार साहब गुजरात जाते थे, हम भी गुजरात जाते थे, कोई भी प्रोग्राम होता था, हम लोगों का वो हमेशा कहते थे कि भाई कांग्रेस वाले तो हमें कभी एंटरटेन नहीं करेंगे, आप हमारे मित्र हैं, आप लोग हमको मदद करिए, दिल्ली में हमारे गुजरात के जो इश्यूज हैं उसमें आप जरूर मदद करिए. मुंबई में जब ये नर्मदा डैम का हाइट बढ़ाने का सवाल आता था, मेधा पाटकर जी का उस टाइम पे एजिटेशन होता था, तो नरेंद्र मोदी जी अपने इरिगेशन मिनिस्टर, अपने चीफ सेक्रेटरी उनको यहाँ मुंबई भेजते थे, मेरे पास भेजते थे. हम हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री तटकरे जी भी थे, इनके साथ चर्चा करते थे और रास्ता कैसे निकालना इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ. सुप्रिया सुले कह रही है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने उस वक्त आरोप लगाया, उनके साथ आप वो सरकार बना रही है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए. अच्छा, मैं डू यू एग्री टू दिस? नहीं, अब आपने पूछा है तो मेरे को बोलना पड़ेगा. हमारे शरद पवार साहब को महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा उलट सुलट गलत बातें और हल्के दर्जे से किसने बोला है
तो केवल बाल ठाकरे साहब ने बोला है, उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि नहीं? आप मुंबई के, महाराष्ट्र के इस ग्रुप के हेड है ना? बिल्कुल बोला है। किसने बोला? तो हम उनके साथ क्यों बैठे फिर? आइडियोलॉजिकली, आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, लोग बोलते हैं बीजेपी के साथ क्यों गए? शिवसेना और बीजेपी एक दो कॉइन, मतलब एक कॉइन के दो साइड है कि नहीं है? सबसे ज्यादा मुंबई में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय माइनॉरिटीज, इनके खिलाफ में किसने आज तक दंगे किए और सब कुछ किया? शिवसेना ने किया या बीजेपी ने किया? तो फिर अगर आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उनके साथ क्यों और इनके साथ क्यों नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि हमको जिसने, मतलब आप नरेंद्र मोदी जी क्या बोले, उससे ज्यादा हमको जो जिसने सुनाया, हम उसके साथ जाके बैठे। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि सत्ता इनके साथ मिलती है, इसलिए जाके बैठे ना। So you've forgotten all the statements that Devendra Fadnavis made about Ajit Pawar, Chakki pisaunga, I will send him to jail. All of that is forgotten. All is fair in politics. No, but please take note of what I said also. That it was forgotten in the case of Uddhav Thackeray, in the case of Shiv Sena. We have now embraced them. Now means not me. Until yesterday, we formed a government in 2.5 years. And I'll tell you one thing, the seeds of this action of today were set in motion around that time only, when Uddhav Thackeray ji became the chief minister. I remember I spoke to Pawar Sahab and I requested him, I said, well, we are forming a government with these people. Fair enough, now it's already, progressing in that direction. At least they have 56 MLAs, we have 54 MLAs. Why can't we have the chief ministership for half the term? There's no major difference in numbers. This is a major revelation. You wanted a half. Yes, so I went and talked to Uddhav ji. Pawar Sahab told me, aap baat karke aao. I went and met Uddhav ji and Aditya Thackeray, both were sitting there. I said, आधा time हमको दीजिए. He just kept mum. I said, 3 साल आप रख लीजिए, 2 साल हमको दे दीजिए. तो अजीत पवार तभी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे. अगर वो मानते तो आप ये कदम नहीं उठाते. बिल्कुल, हमको भी तो लगता ना कि भाई we are also deserving to have the chief ministership of Maharashtra. What is wrong with us? We have a leader, we have capable, if you see NCP, it's a lot of capable leaders in our party. Why should our party be deprived of the chief ministership? Are you still hopeful that you could get the chief ministership? Is that a hope that you'll have, that Ajit Pawar will become CM? See, in this term of the government, till the Vidhan Sabha election, let me be very honest, there is no vacancy. Eknath Shinde is the chief minister. That has been endorsed by the BJP as the largest party in the coalition. We should not have any expectation, and we don't. And after that also, it's a matter of a coalition. We cannot take a call on our own. I can't give you any hypothetical numbers. But that's a hope. Why should we not hope? Any political party, if I don't have aspirations, why would I be in politics? Why would I be working? And I'm told that you want to become union minister once again? Well, listen, what I want to be, I have already been for 10 years. So if it's going to come to me, it will come to me, Rajdeep. That's not the issue. I am not dying to be a union minister. If it comes to me naturally, I'm in politics, I'm in public life, I'm a member of parliament. Am I not entitled? Am I not capable? Or am I not entitled to be one if the opportunity so does come? Sir, I will take it as it comes. I am not aspiring to do it in a hurried manner. Okay. Sir, आप आज यहाँ पर आए हुए हैं. अजीत पवार आते तो हम उन्हें भी पूछना चाहते थे, क्योंकि कल यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस आए थे. And he made a big revelation yesterday. जो 2019 में हुआ, उसकी जानकारी 3 से 4 लोगों को है, उसमें से आप एक है, ऐसा मुझे लगता है. तब आप हमें हिंट देते थे, लेकिन हमने वो हिंट ली नहीं. हमें यकीन नहीं था कि सचमुच में ऐसा हो सकता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको इसके बारे में बोलना चाहिए. कल देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर कहा कि जो राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया गया था, उसकी वो आइडिया जो है वो शरद पवार ने खुद दी थी. और शरद पवार आपके तरफ से जो लेटर भेजा गया राज्यपाल के पास में, वो देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर में टाइप किया गया था और उसका करेक्शन शरद पवार ने किया था. इसमें कितनी सच्चाई है? कहां तक वो बात गई थी? वो 2019 में 23 नवंबर की सुबह का राज क्या है, आज अगर आप यहां पर ऑडियंस के सामने रख सकें. नहीं, मैं कुछ चीजें भविष्य के लिए मैं भी रखूंगा. मैं देख रहा था देवेंद्र जी क्या बोल रहे थे, थोड़ा बहुत क्लिप इधर उधर देखा. थोड़ा बहुत हमारे लिए भी भविष्य के लिए आपके साथ इंटरव्यू के लिए कुछ बाकी रखिए. लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो गुलदस्ते में है. और अगर आप 5 जुलाई को अजीत पवार का भाषण अगर आप बहुत ध्यान से
फिर से सुन लें जो उन्होंने जाहिर हमारे ओपन कन्वेंशन में आफ्टर दिस so called split, after having taken over the NCP, we actually go through Ajit Pawar's speech on the 5th. You will get all the answers to every question you have asked. No, but did this happen? Did this happen? Well, I'm telling you, leave some things for... But the fact is the President's rule came. It's a fact. I told you that there is every likelihood of a President's rule. Obviously, you should take the cue from that. You know, you said so-called split. Many of us who observe Maharashtra politics believe this is Noora Kushti, what is going on. I was in Parliament a week ago, and everyone told me that, you know what has happened? Sharad Pawar and Praful Patel have been sitting together quietly for an hour and a half. Now, if you have split, if you all are so angry with each other, why would you spend an hour and a half with each other? You see, the belief is, unlike the Shiv Sena split, which is clear, they don't even sit or talk to each other. You and Sharad Pawar seem to have interests that lead you to speak to each other for 90 minutes when you come here on TV and claim that, you know, you've broken apart. Are you all still together or not? Are you the plan B? In a way. You know, if the India Alliance wins, you'll go with the India Alliance in 2024. If the India Alliance wins, you'll also go with the India Alliance. This is a clever chess game going on. If you try to stand on two stools, you'll fall only. So don't worry, we are not in that situation. This is a genuine thing that we have formed our own support base, and we are now the NCP because a majority of the legislative wing and the representatives of the political party are with Ajit Pawar. So what were you talking about? Now, see, I'm a civil guy, yeah. I'm not one of those cussed people. I hope you know me by now, Rajdeep. I'm very civil. I'm very respectful to all my elders. And Sharad Pawar ji, as I told you, I have a political difference with him. Why would I not want to be respectful to him? If I meet him in public, I will be very respectful to him. I'll be courteous. I will ask him, inquire about his health. It was the first day of a new building of Parliament. We had all entered for the first time. We didn't know where to go. Obviously, he was also just walking towards the Rajya Sabha chamber, and both of us met each other. I greeted him. I said, let's go in. And willy-nilly, our seats are next to each other. So I have to be... You still sit together? Yeah, why not? And so therefore we talk to each other. And I said, well, for memory lane, let's take a picture in the new Parliament building. There's nothing wrong, you see. Don't make it into such a petty war. You know, we are not into that cat fight, street fight. We are into a political, ideological, and a philosophical, issue where we have thought differently, he thinks differently. Let's put it at that. I don't want to get into, I'm not one of the run-of-the-mill guys who's just going to enter into a तू मैं में. ठीक है सर, लेकिन हम प्रैक्टिकल इश्यूज पर आते हैं अभी, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, उस वक्त आप में से कई लोगों का यह मानना था कि ये 3 पार्टियों की सरकार नहीं चल सकती और इसीलिए हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए. 2 पार्टियों की सरकार ठीक से चला सकते हैं. हमें 2 पार्टी की सरकार चलाने का अनुभव है 15 साल का. लेकिन आप 3 पार्टी की सरकार में आ गए. नंबर 1. नंबर 2, आज की स्थिति में महाराष्ट्र में अगर विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा करना पड़े तो राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और शिवसेना के बीच में काफी सीटें ऐसी की जो कंबाइंड मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़े हुए हैं. इनफैक्ट एकनाथ शिंदे जब बाहर निकले तब आपका कारण देके यानी एनसीपी हमें खत्म करना चाहती है इसलिए हम उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे ये कहकर वो बाहर निकले थे. तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकली ये गठबंधन कैसे चल सकता है और ये सरकार कैसे चल सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के ओवरऑल परिस्थिति क्या है. आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार और जो एक हमारे देश की प्रगति हो रही है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हम अगर केवल महाराष्ट्र के दायरे में देखेंगे तो इतनी बात नहीं है, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा. एंड वी हैव टेकन दैट fundamental call, Ajit Pawar, myself and all the other senior leaders and all our supporters, that we need to see a strong government at the center. We need a progressive government at the center, which Shri Narendra Modi ji is providing. Number 2, the other side is the India alliance. I would say,
I have attended a meeting, which you asked me earlier, in Patna. I know every leader of the India Alliance, having been in Parliament for more than 3 decades. I would only say that it does not inspire confidence within me, and I don't think it will inspire confidence amongst a large number of people of the country. This is my belief. My belief can be different than your belief. My belief can be different from somebody else who is not supporting the same thought process. But the fact of the matter is, if you are talking of an India alliance, I am sorry, you just see everyday statements. Now look at AAP party versus Congress in Punjab. Look at this party versus that party in some other state. I am telling you, this looks very nice on paper because there's been no test. You are only getting together, meeting in hotels, having conversations, photo ops. Even in Mumbai, in the same very hotel when the India Alliance met, they could not even agree on a common symbol. Sir, seat distribution. Seat distribution आपका देखिए हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा अलायंस यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से होने वाला है. लोगों को बहुत स्केप्टिकल थे ना, हमारे कितने मंत्री बनेंगे, हमारे मंत्री बराबर बने, पोर्टफोलियो ठीक मिलेंगे कि नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी कि नहीं, ये स्केप्टिकल थे, वो हमारा यहाँ पर हुआ. हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर्स है उसके बारे में बहुत लोगों को शंका थी, वो भी कल सॉल्व हो गया. फ्यूचर में और मिनिस्ट्रीज जो बटने वाली है उसमें हमारा हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये शंका अगर आपके मन में है वो भी थोड़े दिनों में दूर हो जाएगी. So who is going to win 2024 Maharashtra? Because Sharad Pawar said very clearly he believes India Alliance will win 2024 Lok Sabha, India Alliance or the Mahavikas Aghadi will win 2024 Maharashtra. Do you admit Maharashtra is going to be a big challenge for both sides? It's the final battle. Well, I think Maharashtra, of course, is a very important and a big state. 48 seats is not a small number. And economically a powerhouse of the country. Maharashtra is definitely going towards, in the national election, towards Modi ji and the NDA. And in Maharashtra, definitely towards our Mahayuti of Shiv Sena, NCP and BJP. Okay. The bell has sounded. My final googly question to you. Who is your leader, Praful Patel, after having spent 40 years in public life? Many see you as a businessman and a politician. So I ask you this. Is it Narendra Modi ji or Sharad Pawar ji? Who would you see as your leader today? If someone asks you, Praful ji, आपका नेता कौन है? Ajit Pawar, Sharad Pawar, Narendra Modi? पवार साहब मेरे आदरणीय वंदनीय है, नेता और देश के नेता और भविष्य के देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके साथ मैं हूं. Okay, that's a good, clever answer. That's why we went to the same school. Good, at least you're educated. Thank you. Ladies and gentlemen, Praful Patel.